Good afternoon, students. Good afternoon to all. So, let us start with the revision. I told you that that day I have already sent you the Google form of forest lesson. So, tomorrow I am going to send you the next Google form. Remember that tomorrow. So, the next lesson that will be, so I want the maximum participation for the Google form also, because this is all your sort of revision only going on. तो आप लोग इसको छोड़ नहीं सकते हो, ये ध्यान में रखो. Understood? So here, this is again water. So tomorrow revision for water, that is Google form quiz or Google form. Tomorrow for water I am going to send. Isn't it? So lesson water. That is which tomorrow is Tuesday. Google form. So now for this lesson, that is lesson water, everyone, you have your textbooks with you. So take the textbooks and one by one again, just I will revise it. I will give you one recap against this. So sit with your textbooks also. If you have any doubt regarding this, you can just ask also. Okay. So once again, water a precious resource. Water a precious resource में वाटर टेबल मैंने उस दिन ही बताया था शारदा. अगेन एंड अगेन, सी आई कैन एक्सप्लेन 100 टाइम्स, बट आपको भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है. अंडरस्टूड? कुछ भी आप बोलोगे बार बार कि ये मैंने 10 बार ये समझाया है. वाटर टेबल आई हैव एक्सप्लेन. सो रिमेंबर दैट this is the ground. So when the water drains, and suppose this is the water, so water level, the first point where we get the water, where we see the water in the ground, under the ground, that is called as the water table. It is also called as here according to the definition, क्योंकि अलग अलग है. वाटर टेबल अलग है, फिर एक्विफायर है, इनफिल्ट्रेशन है, ऑल आर रिलेटेड टू द वाटर. बट वाटर टेबल यानी फर्स्ट लेवल जहां पर हमें पानी मिलता है, that is called as the water table. Understood everyone? That is called as the water table. So here also you can see that when the further digging one reaches the depth at which all spaces between the soil particles and the cracks in the rocks are filled with water. यानी here there is no storage of water, but the cracks are filled with water. एकदम जो beginning stage है, original stage जहां पर हमें पानी लग जाता है, that is called as the water table. Understood now? So this is the water table changes from place to place and may even change at a given place. So एक ही जगह पर भी वाटर टेबल अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हमने डिग किया, हमें यहाँ पानी लगा है. हम थोड़ी दूर में यहाँ डिग करेंगे, हमें हो सकता है थोड़ा नीचे पानी लगे या पहले ही पानी लगे. So the
First point, the starting point at which we get the collection of the water. The water is collected in the cracks, in between the soil, between the rocks. So that is the water table. Understood now? So next is, so Manthan have asked about the water management. Now this is very important, students. Why we are aware, why we are studying about the water? The first reason is that we need to conserve, we need to save the water that we are having, because we are continuously facing the problems with water. We are facing the deficiency, the scarcity of water. तो इसके लिए, ये सब चीजों के लिए वाटर मैनेजमेंट पहले, सबसे पहले बहुत बहुत जरूरी है। वाटर मैनेजमेंट नो, अभी मैनेजमेंट यानी क्या, ये सिर्फ मैनेजर का काम है? नहीं, मीन्स वी पीपल दोज हु आर यूजिंग द वाटर हैज टू मैनेज द वाटर। यानी अगर कम पानी है फिर भी हम कम इसमें कैसे यूज कर सकते हैं, पानी को और कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। ओके, सो और रिसाइकल कर सकते हैं, कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर द वाटर मैनेजमेंट। या पानी का वेस्टेज हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, पानी को और ज्यादा से ज्यादा यूज में कैसे ला सकते हैं, कम पानी को ज्यादा एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं। Okay, so that is called as the management of water. That is the management of water actually. Understood now? Is it clear? So now here also you can see that management में भी बहुत सारे और means we can say that how to manage it, that also depends upon person to person. Understood? फिर उसको हम कैसे यूज करते हैं, हमारे पास क्या क्या सोर्सेस है, हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं पानी को, और उसका कैसे यूज करते हैं। सो ऑल दिस कम नाउ। ट्रैकलिंग वाटर शॉर्टेज, ट्रैकलिंग वाटर शॉर्टेज यानी कि वाणी एक्चुअली मीन्स टू ओवरकम, या हम कम पानी को कैसे यूज कर सकते हैं, उसको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टैकलिंग द वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज तो हमेशा रहेगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और पानी का शॉर्टेज हमें देखने को मिलेगा, बट इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वाटर ट्रैकलिंग। सो ट्रैकल यानी ऐसा कोई स्किल हमारे पास होना चाहिए जिससे हम पानी के शॉर्टेज को भी मैनेज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है वाणी? सो ट्रैकलिंग मीन्स हम कैसे हैंडल करते हैं, हाउ वी कैन हैंडल द शॉर्टेज ऑफ वाटर। सिर्फ हम चिल्लाते रहेंगे अरे पानी का शॉर्टेज है, पानी का शॉर्टेज है, तो नहीं होगा, बट वी हैव टू एक्ट ऑन इट। हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज आवर एक्शन for the shortage of water, how we are overcoming the shortage of water, that is called as tackling of water shortage. Understood now Vani? The next, so next again, anybody have any doubt, you can just ask. बाकी सबको सब समझ में आ गया क्या? बाकी लोगों का डाउट सबको सब क्लियर भी हो गया? सो आपको ये याद रखना है कि वाटर शॉर्टेज के रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है,
डिप्लीशन ऑफ वाटर के, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, दैट ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस लेसन। उसके बाद आएगा हमारा वाटर मैनेजमेंट, यानी हम किस तरह से वाटर को प्रिवेंट, वेस्टेज से प्रिवेंट करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। सो देयर आर मेनी अगेन मेनी मेथड्स लाइक प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ वाटर। सो तन्मय डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, डिप्लीशन में क्या आएगा कि व्हाई द वाटर टेबल इज गोइंग डाउन, डिप्लीशन क्यों हो रहा है, रिड्यूस क्यों हो रहा है। ओके, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल्स, तो ये पॉइंट्स भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। डिप्लीशन क्यों हो रहा है, इसके रीजंस, मेन रीजंस ऑलरेडी गिवन। फर्स्ट इज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन है तो लोग ज्यादा पानी का यूज करेंगे, है ना, यानी कि रेन वाटर तो उतना ही है लेकिन पॉपुलेशन इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, वी आर आवर कंज्यूमिंग और कंजम्पशन ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, सो पॉपुलेशन एक है रीजन। देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, पॉपुलेशन बढ़ गया है सो हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी बढ़ गए हैं, वी नीड मोर फूड, वी नीड मोर yield of agriculture, so most of the water is used for this purpose. Then industrial activities, हर जगह पे इंडस्ट्रीज खुल गई है, बहुत सारा पानी इंडस्ट्रीज के लिए जाता है, isn't it? Then deforestation, because there is a lot of cutting of trees, so these cutting of trees, because of the cutting of trees, the rainfall has become less. Okay, so these are all reasons for depletion of water table. Then डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, यानी अर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन तो अनइक्वल है, ऑलरेडी वो जो भी डाटा दिया है बस वही एक डाटा है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ का, isn't it? तो यहाँ पर जो है कैसे दिया है, आउट ऑफ दिस मच वाटर ओनली वेरी लेस वाटर इज फ्रेश वाटर, जो हम पी सकते हैं पानी, पीने वाला पानी जो है या हम जो यूज कर सकते हैं वो पानी जो है वो बहुत बहुत कम है अर्थ पे, अंडरस्टूड। और उसमें से भी उसमें से भी जो पानी पीने लायक है वो बहुत कम है, मीन्स जो पोर्टेबल वाटर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर इज अनक्लीन, पोल्यूटेड और सब ये हो गया है, और इस तरह से जो पीने का पानी है जो मिलना चाहिए वो हमें उतना साफ नहीं मिलता है, उसके लिए सबसे ज्यादा हमारी कोशिश रहनी चाहिए। ओके, और ड्रिप इरिगेशन यानी सबको पता है, पाइप्स आर सेट एट द बेस ऑफ द ट्री या प्लांट, जहां पर ड्रॉप बाय ड्रॉप द वाटर इज dipped there and the water is saved through drip irrigation। वहां पे एक छोटा सा होल होता है जो टाइमिंग के हिसाब से at the proper time interval it gives the drop by drop water to the roots of the soil। इससे क्या होता है, हमारा पानी बच जाता है, बहुत सारा पानी बचता है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? So, again, anybody else have any doubt? And students, ये सब जो भी doubts आपको आ रहे हैं, I know that you are not reading the test books properly. You are not reading the test books. At least you read the test book once. एक बार आप read करोगे, बहुत सारा आपका concepts भी clear हो जाएगा। So I am telling you that read the textbook. Okay. Yes, then
read it, and tomorrow we will go for the Google form. I will be distributing it at the same time at 2 o'clock. And if you have any doubts, you can ask. Students, if you have any doubts, तो ये यहाँ पर वाटर में फॉर्म्स ऑफ वाटर भी है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड ग्राउंड वाटर में बहुत सारे टर्म्स हैं, सो दैट यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली. Terms are there, that means so many terms which are very very important. ये terms read करो और उसे आपको शिवराज, this type of questions you don't ask please, because I also don't know when is our final. ये वो जब पता चलेगा तब तुम्हें भी बता दिया जाएगा, है ना. हम थोड़ी अपने पास रखने वाले हैं, पेपर हमें नहीं छुड़ानी है, पेपर आप लोगों को ही छुड़ाने हैं. So whenever it will be finalized, you will be informed regarding that. So remember these things. Then tackling water shortage, जो अभी वाणी ने पूछा था, टैकलिंग में हाउ टू हैंडल द वाटर शॉर्टेज, उसके ऊपर हम क्या एक्शन ले सकते हैं. सो एक है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फिर ड्रिप इरिगेशन. सो ये इस तरह से हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. मेन पार्ट इज हाउ टू हैंडल द वाटर शॉर्टेज. अगर हमेशा के लिए पानी कम, जैसे राजस्थान में पानी कम ही आता है, बट स्टिल we can't say that people are dying because of water. So they know how to tackle, they know how to handle the shortage of water. समझ में आ रहा है. So they have also adopted so many new technologies. For example, rain water harvesting. वहां पर आपने देखा होगा राजस्थान में स्टेप वेल्स आर देयर, है ना. तो वहां पर ये जो बावड़ीज वगैरह होते हैं, वहां पर बहुत सारा पानी भी होता है कलेक्ट करके, और इस तरह से ये पानी को कलेक्ट करने के बाद इस वाटर को यूज करते हैं. So these are all how they use the water very efficiently, even though they have the shortage of water. फिर इसमें ड्रिप इरिगेशन जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है. तो यही है वाटर को कैसे हम कम से कम पानी को अच्छे से अच्छा यूज कर सकते हैं. अंडरस्टूड. और लास्ट में जो है इफेक्ट ऑफ वाटर स्केर्सिटी ऑन प्लांट्स. सो एज द वाटर बिकम्स लेस, क्योंकि पानी कम है तो न्यूट्रिएंट्स जो है दैट आर आल्सो नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, और फिर इस तरह से प्लांट्स मर जाएंगे, एंड दिस इन टर्न वुड मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म. क्योंकि पानी नहीं है तो प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स नहीं है तो कोई भी नहीं है, बिकॉज वी आर alive because of the plants. We get oxygen from plants, we get food from plants, and we get everything from the plants, isn't it? So they support us. We are not supporting the plants. Plants, they support us. So students, if plants are not there, we will also die one day. So remember that. And last and but not the least, that सभी का जो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन, वाटर का हो, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे फूड का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, द सॉल्यूशन इज प्लांट. सो प्लांट मोर ट्रीज. रिमेंबर दैट यू हैव टू प्लांट मोर ट्रीज. दिस इज ओनली द सॉल्यूशन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? Is it clear? So again, anybody have any doubt? अगर है तो आप मैसेज करो, otherwise tomorrow I will be giving you the Google form.
And day after tomorrow, the next lesson we will be starting again with the revision. Okay. लेकिन सबको ऑनेस्टली रिविजन करना है, रिवाइज करना है एट होम. रिमेंबर दिस, isn't it? हाँ. So thank you, students.